हाय दोस्तों, बिजनेस रिस्क. The term business risk refer to the possibility of inadequate profit or or even losses due to unexpected or unexpected event. Business enterprise business enterprise business enterprise are divided into two parts: speculative and pure. Speculative means it arises both gain or loss. It arises due to change in market condition, including fluctuation in demand and supply. ये गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. बिजनेस को फ्लक्चुएशंस होता है, फ्लक्चुएशन नॉट इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज प्योर. प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. या तो इसमें लॉस होगा या तो कोई कुछ नहीं होगा, नो लॉस. जैसे एग्जांपल फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा. स्पॉइलेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा आर कम अंडर प्योर रिस्क. इसमें या तो लॉस हो सकता है या तो कोई लॉस नहीं हो सकता इसमें, लेकिन गेन नहीं होगा. नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क arises due to uncertainties. Business is an essential part of every business. Risk is an essential part, sorry. Degree of risk depends mainly upon the nature and size of the business. Fourth, profit is the reward of the risk taking. Business risk arises due to uncertainties. This is due to lack of knowledge about the future. ये खाली lack of knowledge, अगर आदमियों पर नॉलेज नहीं रहे फ्यूचर में क्या होगा, तब ये रिस्क होता है. सेकेंड इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. ऑल द बिजनेस have risk. No business can avoid risk. They can only maximize risk, and risk is very essential. Third, degree of risk depend upon the nature and size of the business. Generally फैशन आइटम्स को ज़्यादा बोला जाता है रिस्क है, क्योंकि फैशन चेंज होते रहता है. लेकिन बोला जाता है लार्ज बिजनेस लार्ज रिस्क, कम बिजनेस कम, स्मॉल बिजनेस स्मॉल रिस्क. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. नो बिजनेस नो गेन, नो रिस्क नो गेन. Causes of business. There are 4 causes of business. First, natural cause. Second, human cause. Third, economic cause. And fourth, other cause. First, natural cause. Human cannot control nature calamities like heavy rain, flood, earthquake. They cannot control. This risk is always there. Then second is human cause. It includes such unexpected event like dishonesty, theft. मतलब इसमें कुछ भी ह्यूमन कोई गलती कर देता है, आदमी जो चोरी कर लेता है या डिसऑनेस्ट. Third is economics cause. This include uncertainty relating to demand for goods, competition, price, collection of dues from customer. ये चेंज होते रहता है फैशन, उसके वजह से डिमांड चेंज रहते रहता है. And the fourth and last cause is other cause. These are unforeseen events like political distribution. I hope you will like this video. Give this video a big thumbs up
and please subscribe to my YouTube channel.